Good evening everyone, welcome to Unacademy and welcome to this session guys. So in this session I'm going to discuss progression, that is arithmetic progression and geometric progression. So just let me check if everything is okay. Good to go. So those who are watching me for the first time, this is something about me. My name is Shyam Jagrut. I have been training the student for last 8 years. I do teach the students for quantitative ability, logical reasoning and data interpretation. And I have trained more than 7,000 students for MBA Entrance exams. So agenda for today's session guys, मैं क्या करवाने वाला हूँ आज basic से हम सीखेंगे arithmetic progression and geometric progression. We'll be doing the concept questions, we'll learn the formulae and we'll understand the logic behind the formulae, and this is how we'll go, and we'll practice the questions which will be of easy to moderate level, most of the questions, and there will be few questions which are from actual CAT papers as well. So let's begin. Those who are new to our channel guys, quickly subscribe to this channel. If in case अगर किसी ने subscribe नहीं किया है, quickly subscribe to this channel, Unacademy CAT4MBA. You can also join our Telegram channel, that is CAT4MBA, where you'll be getting the PDF notes of the sessions we conduct here on YouTube, as well as for the session we conduct on Unacademy platform. So if you want to attain the special sessions, these are completely free of cost. You can just go to Play Store, download the Unacademy learning app and attain all the special sessions from the top educators of India. And if you are willing to go for the plus subscriptions, if you want to attain the plus courses from the educators and you are willing to go for the mock test, so there are many features like mock test and you'll be directly interacting with the faculties. So you can go for I'll recommend to go for 1 year or 2 year plan. 1 year plan is close to 16,000 and 2 year plan is close to 19,000. And if you use this code SHAM1, this is my discount code, you can use this to avail 10% of discount. So don't forget to use this code SHYAM1 to avail 10% of discount. So let's begin guys. So let's understand what is arithmetic progression. So guys, let's understand the concept first. Okay, so arithmetic progression. So progression is just a series of arithmetic progression simply means the series in which the progression in which the difference between two consecutive terms or two successive terms is constant. So it may be increasing arithmetic progression or it may be decreasing arithmetic progression. So basic thing, डिफरेंस अगर सेम है, कांस्टेंट डिफरेंस से ऐड हो रहा है या फिर कुछ कांस्टेंट डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, we call it as arithmetic progression. Okay, so every term of AP is great if every term of AP is greater than the previous term, the AP is said to be increasing AP, and vice versa. If it is decreasing, we say it is decreasing AP. Okay, so let's have a few example. You can easily write the examples at your own. जैसे यहाँ पे कुछ example है 1 2 3 4 natural numbers, right? These are in arithmetic progression. जहाँ पे भी difference constant है, we call it as arithmetic progression. You can have odd numbers और यहाँ पे +4 +4 +4 हो रहा है, difference constant increasing भी हो सकता है. यहाँ पे -6 हो रहा है, -6 -6 -6. So difference may be negative, that is decreasing AP or increasing AP. That's the really simple thing about arithmetic progression. जिस भी series में difference constant होता है, we call it as arithmetic progression. Now the next thing is, let's say अब सोचो थोड़ा सा कि फॉर्मूले कैसे आए हैं, arithmetic progression के फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए हैं, ये अगर तुम्हें समझना है तो एक सिंपल सा सीरीज मैंने यहाँ पे लिखा है 1 5 9 13 17 एंड सो ऑन. अगर मैं तुम्हें इस सीरीज का 10th टर्म निकालने के लिए बोलूँ, डेफिनेटली गाइस ये डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा कि तुमने शुरू कहाँ से किया, फर्स्ट टर्म क्या था एंड डिफरेंस कितना था. तो डिफरेंस यहाँ पे 4 4 4 4 है, राइट? So now how this formula came, a plus n minus 1d, this is the formula for nth term of AP. The reason being, listen, एक तो तुम ऐसे +4 ऐड करते जा सकते हो, बट अगर मुझे 100 टर्म निकालना है और समथिंग लाइक दिस, सो व्हाट आई कैन से, if I write general arithmetic progression where first term is a, second term क्या होगा, a plus d. Just look at the similarity and observe the things.
थर्ड टर्म क्या होगा, इट विल बी a प्लस 2d, एक और डिफरेंस d ऐड होगा, लेट्स d add या subtract whatever it is, so plus d. Fourth term will be a plus 3d. so if you observe this thing, अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो मैं a plus 3d करूंगा, अगर फिफ्थ टर्म चाहिए तो a plus 4d करूंगा. द सेम वे अगर मुझे 10th टर्म चाहिए t10, so I need to do a plus how many times d, 9 times of d, not 10 times. ओके, यहां से सेकेंड टर्म में d ऐड होता है, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ में 3d, फिफ्थ में 4d ऐड होता है. सो दैट 10th टर्म में इट विल बी फर्स्ट टर्म प्लस 9 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस. दैट्स सिंपल कॉमन सेंस, राइट? Hopefully you understood this formula. That's why the formula for nth term of arithmetic progression is always a plus n minus 1 into difference d. तो अगर मुझे यहाँ पे 10th टर्म चाहिए तो ये होगा 1 plus 9 into 4, 36 plus 1, that has to be 37. If you write it, you can get that term. Right, so that's the simple formula for arithmetic progression. Hopefully you'll be able to remember this one, the nth term of arithmetic progression. Then arithmetic progression होने के बाद हमें देखना है geometric progression. But before we move to that, हमें arithmetic progression में दो चीजें सीखनी है. एक तो हो गया अपना already, अभी हमने क्या सीखा, nth term, how to get the last term or nth term or whatever the number of, means any term you want, 100th term, 50th term, you can use this formula tn, that is first term a plus n minus 1 into difference d. Then we are supposed to do one more formula in arithmetic progression, that is summation of the arithmetic progression. Really interesting thing. Let's understand, if I want to add this 10 terms, so we just saw the first term is, the first term is 1, then next one is 5, 9, 13, 17, and we know 10th term हमने अभी calculate किया था, it is 37, right? 9 4s are 36. इसके पहले के टर्म्स अगर तुम लिखोगे, सारे टर्म्स अगर लिखने हैं तुम सारे भी लिख सकते हो, 17, 21, 25, 29, 33, 37, right? Just to understand the concept, I'm writing it as such. There is no need to write this thing. Start the first and last, then second to second last, third to third last. तुम कोई भी ये पेयर्स में ऐड करके देखो, ये एडिशन तुम्हें मिल रहा है 38, 38, 38, 38. So addition कितना होगा, 5 times of 38, because how many pairs are there? There were 10 numbers. 10 divided by 2 into sum of the first number plus last number. हमने ये किया first term plus last term, and this is n by 2. Basically हम क्या यूज कर सकते हैं, n by 2 into first term plus last term. That's the formula for sum of arithmetic progression. So 38 into 5 अगर हम करेंगे, that comes out to be 190. So if you add these numbers, it will come out to be 190. Just a minute, let me check one thing. Okay, so that's the formula for arithmetic progression, and we can simply remember in a different way as well. देखो यहाँ पे थोड़ा सा different way में लिखा है, basically same चीज है,
It is n by 2 in bracket first term plus last term. That's what we decided. Now we know this will be equal to n by 2. What is the first term? A. Then last term. What is the formula for nth term? Last term means, last term I can write it as nth term. Tn के लिए क्या formula था? A plus n minus 1 into d. So a plus n minus 1 into d. So if you look at this formula properly, सिर्फ यहाँ पे a और a दो बार आया है, so that's why n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 d, or first term plus last term. Okay, all of you know this, must be knowing this formula. In case किस कोई आज फर्स्ट टाइम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहा है तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं. दो फॉर्मूले हमने देखे, nth टर्म एंड सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. So let's try to solve few questions based on this. Then I'll just take few concept question and then we'll move to the concepts of geometric progression. उसके फॉर्मूले देखेंगे and we'll practice the mixed questions after that. So the ninth term exceeds the fifth term of arithmetic progression by 32. Really simple question, straightforward, just to check if you are getting the concepts or not. Just simple concept question, you can say. The sum of the ninth and the fifth term is 114. The eighth term of AP is. Can you just solve this and let me know in the comment section if you understood this part. Guys, what is the formula for nth term? It is a plus n minus 1 into d, right? So अभी यहाँ पे हर बार a का वैल्यू पुट करो फिर d का वैल्यू पुट करो, ऐसे मत सोचो. Just look at the general form of arithmetic progression. अगर तुम्हें स्पीडली करना है, just remember this way. First term is a, second is a plus d, third is a plus 2d, right? So if you know this way, need not to write as such, you need not to write any formula. Simply what I can say, the ninth term exceeds the fifth term of an AP by 32. That simply means ninth term, that is, I'll just write T9 minus T5 is 32. Ninth term के लिए formula क्या होगा? A plus 8D and minus this will be A plus 4D. Ninth term a plus 8d, fifth term a plus 4d, this is 32. So a gets cancelled, 8d minus 4d hoga, so 4 times of difference is 32. So basically the difference of AP is 8, right? And the sum of the ninth and fifth term, sum of the ninth and fifth term, that is a plus 8d plus a plus 4d, ninth plus fifth term, this sum is 114. So you can get the value of a here, which is 2a plus 12d. 2a plus 12 times of difference is 114. I'll just make it half. A plus 6d is, हमें 8th term निकालना है. Yes, that is 65. Harshvardhan, right? A plus 60 will be 57 and we know the difference is 8. तो एक बार तुम डिफरेंस ऐड कर दो, यहाँ पे आंसर आएगा 65, तो भी चलेगा. या फिर किसी को सॉल्व ही करना है तो 6 का डिफरेंस रखो, 6 8 जा 48, 48 माइनस करो, a will be 7 plus 2 9 and you can get the 8th term as a plus 7d, that is 9 plus 7 into 8, 56 plus 9, that is 65. But anyways तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो. a plus 6d का मतलब ये 7th टर्म है, इसमें तुम डिफरेंस 8 ऐड करो, 57 plus 8 तो भी 65 आ जाएगा. That's perfectly fine. Okay, really simple question on arithmetic progression. Let's quickly proceed. For 54th term and the 4th term of AP is minus 61 and 64 respectively. Find the 23rd term. Can you do this quickly?
अच्छा चलो एक थोड़ा सा शॉर्टकट से करते हैं अभी विदाउट फॉर्मूला. ओके, वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लिसन. फोर्थ टर्म एंड 54th टर्म, क्या लगता है कितना डिफरेंस है 54th टू 4th टर्म? या फिर तुम a+3d लिखो, फिर a+53d लिखोगे, तो टोटल डिफरेंस आएगा 50 टाइम्स. 50 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस. राइट. 54th टर्म जो है वो -61 है एंड 4th टर्म जो है वो 64 है. तो बेसिकली तुमने क्या किया है, 64 सॉरी -61 -64 ये आता है 125. सो दिस इज -125. सो दिस इज अ डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली. सो डिफरेंस विल बी -25 का 5 टाइम्स, 25 का 2 टाइम्स, -5/2, that is -2.5. this is the difference, and we are supposed to calculate the 23rd term. We know 4th term is 64, so a+3d is 64, d is -2.5, a -7.5 will be equal to 64. a सबसे पहले हमें मिलेगा 71.5. then if you want to calculate the 23rd term, that is a+22d, that is 71.5 minus 22 into 2.5. hopefully got it. -22 का डबल होता है 44, 44 55 माइनस हो जाएगा यहाँ से, और विच कम्स आउट टू बी 16.5. दैट्स रियली सिंपल एज सच, नो नीड टू सॉल्व दिस, जस्ट कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. दैट्स इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. द 6th टर्म ऑफ AP is 38 and 6th and 8th term is 38 and 52. Can you do it orally without pen paper? Let's just 30 seconds. Okay, we'll not spend too much of time in this. Find the sum of the first 12 terms. Can you do it? 6th term and 8th term. 6th term is a+5d is 38, a+7d is 52. If you subtract this, you'll get 2 times of difference as 14. Difference is 7. 7 sevens are 49. A must be 3. Then हमें क्या करना है, sum of first 12 terms. Just to check if you remember the formula, what you need to do, number of terms is 12. a का वैल्यू है 3 and d का वैल्यू है 7. so you should be able to directly do it. n/2 in bracket 2a plus n-1 into d. और तुम्हें फर्स्ट प्लस लास्ट करना है तो 12th टर्म पहले निकालना पड़ेगा. नीड नॉट टू डू दैट. 12 divided by 2 in bracket twice of 3 is 6 plus n-1 11 into 7, that is 77 plus this is 6 into 77 plus 6, it is 83. 18 carry 1, 498. So answer is 498. Try for this. The sum of first 9, let's speed up guys, I'm not going to give you too much of time for this. We have a lot of question to do and understand the concept as well. These are really easy questions. Just try it at your own and खुद के अपने आंसर्स चेक करो तुम्हारे सही आ रहे क्या. The sum of the first 9 terms of AP is 387. What is the 5th term? Can you do it? It should not take maximum, it should take 30 seconds to answer this question. See if you can answer it orally. Sum of first 9 terms of arithmetic progression is 387. What is the 5th term of AP? Can you solve this, Harshvardhan? क्या कर रहे हो तुम, फॉर्मूला यूज कर रहे हो या कुछ डिफरेंट? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सोचो, अंडरस्टैंड,
लर्न समथिंग जो फॉर्मूले से तो डेफिनेटली आएगा, तुम वैल्यूज पुट अप करोगे तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट सोच के देखो. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कांस्टेंट होता है, सो कैन वी डू समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मूले एंड कैन यू बिल्ड अप वन शॉर्टकट हियर. ये शॉर्टकट खुद से बिल्ड करते आना चाहिए डेफिनेटली सबको. इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यू विल बी एबल टू यूज दैट शॉर्टकट. द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एपी, क्या करना है इसमें? Please let me know what you are doing. Are you using formula n equal to 9 and all? Sum हमें दिया हुआ है and we are supposed to calculate the fifth term. क्या करना है? फॉर्मूले से करना है. n by 2 in bracket 2a plus n minus 1. n minus 1 is 9 minus 1 is 8d, and this summation n is 9, this summation is 387. any answer? क्या हो गया? आंसर ही नहीं आया. 2 अननोन आए इसलिए आंसर नहीं आ रहा है क्या? कंफ्यूजन है. 9 4 36, 9 3 27, 43 into 2 86. so 2a plus 8d is 86. so if we divide it by 2 it will be 43 is equal to a plus 4d. कितने लोगों को समझ में आया आंसर क्या है, या अभी भी कंफ्यूजन है? See guys, the question is not about what is the first term and what is the last term and what is the difference and all. It is just about the fifth term. Fifth term क्या होता है पहले बताओ. Fifth term is a plus 4d and we got the value for a plus 4d. a plus 4d is 43. so the fifth term is 43. Now understand what else you can do. हमें पता है कि अगर मैं फिफ्थ टर्म को x ले लेता हूं, लेट्स से, फोर्थ टर्म क्या होगा, सिक्स्थ टर्म क्या होगा बताओ? x plus d, this will be x minus d. next term will be x plus 2d, this will be x minus 2d. I'm talking about the third term and seventh term, right? एट्थ टर्म अगर मैं बात करूं तो ये होगा x plus 3d एंड तुम्हारा सेकेंड टर्म होगा x minus 3d. एक्चुअली ये लिखने की जरूरत नहीं है. वंस यू अंडरस्टैंड दिस वन स्टेप you'll get the answer. x minus 4d एंड नाइन्थ टर्म जो आएगा that will be x plus 4d. तो मैंने क्या किया, मैंने मिडल से स्टार्ट किया एंड अगर मैं सारे टर्म्स को ऐड करूं तो ये सारे माइनस 2d 1d 3d 4d ये सारे इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे एंड इफ यू ऐड दिस 9 टर्म्स दिस समेशन विल बी 9x. क्या ये समझ में आया 9x कैसे लिखा मैंने? यस और नो? इफ यू डोंट वांट टू यूज द फॉर्मूला एंड सिंपल कॉमन सेंस हम यूज करते हैं कि डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो डिफरेंस सेम होगा, राइट? and if I take the middle fifth term, because fifth term is the middle term, okay, and middle term is nothing but the average of arithmetic progression. You can remember that also, okay. तो हमने अगर फिफ्थ टर्म निकालना था तो हमें क्या करना चाहिए था, 387 मीन्स ये टोटल एडिशन है 9x, so you'll get the value of x as 387 divided by 9. सिंगल स्टेप आंसर था इस क्वेश्चन का 43. middle term has to be 43. Have you understood this shortcut? Yes or no? It's more of your concepts. अगर तुम्हें AP क्या है ये समझ में आता है तो डेफिनेटली तुम ये सब चीजें टैकल कर सकोगे without formula. There is no need of formula for such questions, so that's why I included this question to understand the arithmetic progression in a better way. Let's move to the next thing.
let's come to the geometric progression, then we'll practice some questions. Mixed रहेगा, फिर AP GP दोनों mixed रहेगा. Okay, so let's understand what is geometric progression now. So geometric progression is the progression जहाँ पे रेशियो सेम होता है, या फिर तुम सिंपली बोल सकते हो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है. जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, डिफरेंस, समथिंग ऐड हो रहा है या फिर कुछ माइनस हो रहा है, कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है या तो कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है. Here in geometry progression you can just multiply by a constant number. We call that multiplier, constant multiplier as r. R हम इसलिए यूज करते हैं because that ratio of the two terms remains same. So जैसे अगर तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डबल हुआ into 2, so ratio of these two terms will be 2. कौन सी टर्म का रेशियो 2 होगा, सेकेंड इज टू फर्स्ट, थर्ड इज टू सेकेंड, नेक्स्ट टर्म टू द प्रीवियस टर्म का रेशियो आएगा अपना 2. दैट्स वी कॉल इट एज आर. राइट, सो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है. यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीजिंग जीपी कब होगा, जब आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इट विल बी इंक्रीजिंग. डिक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव नहीं होने की जरूरत है, इट विल बी जस्ट हाफ 1/3 ऐसे भी होगा. दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग बिकॉज मल्टीप्लीकेशन के अपोजिट क्या होगा, डिवीजन. तो मल्टीप्लाई करते जाओगे. राइट, सो हियर इफ you look at the third series, it is 1/5, then it is again 1/5. पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज डिक्रीजिंग. सो दिस इज डिक्रीजिंग एपी. यहाँ पे आर का वैल्यू अपना होगा 1/5. नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई जस्ट टेल यू वन थिंग कि nth टर्म, हमें दो फॉर्मूले यहाँ पे भी देखने हैं, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. उसमें से nth टर्म का फॉर्मूला आई टेल यू कि कैसे आया, and sum of geometric progression you need to mug up as it is. Okay, I will just try to apply and it will be easy for you to remember. I'll just apply it with small examples. Okay, so first thing, अगर मैं start करता हूँ first term as a and common ratio as r, तो next term of geometric progression must be a into r. That is the second term. अगर मैं थर्ड टर्म के लिए जाऊंगा, इट विल बी ए आर स्क्वायर. फोर्थ टर्म अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा a इंटू आर क्यूब. बेसिकली हम इंटू आर इंटू आर इंटू आर ऐसे करते जा रहे हैं. राइट, सो इन केस अगर मैंने तुम्हें पूछा व्हाट इज 100th टर्म, यू शुड बी एबल टू आंसर मी. a was the first term, a into r to the power 1 second, third is a r square, fourth is a r cube. तो 100th टर्म क्या होगा, a into r to the power 99. This is the way you can answer for any nth term of geometric progression. So tn for geometric progression will be first term a into r to the power क्या करना है तुम्हें, n minus 1. That's the simple formula for nth term of geometric progression, और the last term of geometric progression के लिए हम इसे normally use करते हैं. But in case the middle term or whichever the term you need to find, just get the value of n and you can get that term using the formula a into r to the power n minus 1. Hopefully you understood this, and that's really easy to remember as well. Even if you forgot, that's not a big deal. तुम यहाँ से करते देखो, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है. राइट, सो मल्टीप्लाई करते जाना है r से. सो बेसिकली ये करते आना चाहिए. अगर तुम्हें 10th टर्म चाहिए t10, इट विल बी a इंटू आर टू द पावर 9. अगर मुझे 25th टर्म चाहिए, इट विल बी a इंटू आर टू द पावर 24. ये तुम्हें याद रहना चाहिए. दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू यूज इट. राइट, एंड द नेक्स्ट थिंग, समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम देखते हैं. सो फर्स्ट फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म एज a, कॉमन रेशियो एज r, and nth term of that gp, sorry not ap, the nth term of that geometric progression will be a into r to the power n minus 1 star mark. Okay, so you can easily get the 10th term of this. क्या आएगा इसका 10th term, 1 into 2 to the power 9. So 10th term of this gp will be 512. Concept question, simple one.
Okay, now the most interesting thing now related to summation. Okay, चलो एक चीज समझते हैं कि हमें अगर ये geometric progression ये अगर ऐड करना है, सारे नंबर्स ऐड करने हैं which are in geometric progression, these are the powers of 2. All of you must be knowing ये formula भी किसी को पता होगा actually. 2 to the this is 1 is 2 to the power 0 basically. 2 to the power 0 plus 2 to the power 1 plus 2 square and so on till 2 to the power n. The formula is 2 to the power n plus 1 minus 1. कितने लोगों को ऑलरेडी पता है ये फॉर्मूला? अपॉन 2 माइनस 1 हम लिखते नहीं है, नॉर्मली ऐसे लिखा रहता है. द रीजन बीइंग द सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वी हैव दिस फॉर्मूला. सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म इनटू r टू द पावर n माइनस 1. ओके, सो यहाँ पे n प्लस 1 क्यों लिया मैं बताऊंगा बाद में. लिसन नाउ, जस्ट फॉर नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स वी स्टार्टेड फ्रॉम 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब एंड सो ऑन. हमें जाना पड़ेगा 2 टू द पावर 9 तक, क्योंकि 10th टर्म मैंने अभी तुम्हें बताया 10th टर्म वोंट बी 2 टू द पावर 10, इट विल बी 1 इंटू 2 टू द पावर 9, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है 2 टू द पावर 0 से, तो 10th टर्म 9 पे खत्म होगा यहाँ पे, राइट? अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो वैसे तो क्लियर. या फिर 10 माइनस 1 दैट इज n माइनस 1, 10 माइनस 1 यहाँ पे इसलिए 9 हो रहा है. सो होपफुली यू अंडरस्टूड दैट. And after that, if I want to add these numbers, what we can do is the formula is a into r to the power n minus 1 upon r minus 1. So this is the sum of geometric progression. You need to remember it directly. और इसमें थोड़ा सा modify भी होने वाला है depending on the value of r. r अगर greater than 1 है तो mostly हम ये use करेंगे. r greater than 1 है तो, और यहाँ पे r2 है which is greater than 1. So we'll use this directly. Okay, और जब less than 1 होगा, half होगा, 1/3 होगा, तो क्या करना है we'll discuss later. But as of now you need to remember this summation formula, that is summation of the geometric progression. Okay, so अगर मुझे ये numbers add करने हैं तो हमने क्या करना चाहिए? First term is 1, then r का वैल्यू कितना है? 2, 2 to the power number of terms कितने हैं? 10 minus 1 अपॉन 2 माइनस 1. दैट्स हाउ इट वर्क्स. 2 टू द पावर 10 होता है 1024, बाकी सब 1 हो रहा है यहाँ पे. तो आंसर इज 1023. अब मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखा था दूसरे वे में, किसी को ये फॉर्मूला डायरेक्टली पता होता है नॉर्मली. सो आई यूज डिफरेंट, आई विल नॉट यूज n ओवर हियर सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज. 2 टू द पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. अगर मुझे टिल 2 टू दी पावर 9 तक ऐड करना है तो मैंने क्या करना चाहिए? सीधे सीधे 2 टू दी पावर नेक्स्ट पावर लो और -1 करो. ये फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द जनरली सबको पता होता है. इन केस इफ यू नो एंड इवन इफ यू डोंट नो दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज दैट इज टोटली डिराइव्ड फ्रॉम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तुम्हें अगर सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला तुम बना सकते हो, राइट? द नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस 1 तुम कहीं पे भी अप्लाई करके देखो इफ यू वांट टू अप्लाई. अगर मुझे ऐड करना है 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ओके, विच इज 2 टू द पावर 0, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 अगर मुझे ऐड करना है तो तुम्हें सिंपली क्या करना है? 8 के बाद पावर ऑफ 2 क्या है? 16 माइनस 1, दैट कम्स आउट टू बी 15. So that's the shortcut way we most of the time use, and that formula is derived from this geometric progression. Okay, so let's remember this formula. First term into r to the power n minus 1 upon r minus 1. एंड अभी तुम पावर ऑफ 3 के लिए बना के देखो, खुद से बना के देख सकते हैं. चलो लेट्स ट्राई फॉर पावर ऑफ 3 वंस. लेट मी सी, लेट मी चेक इफ यू कैन डू. देखो, अगर मुझे पावर ऑफ 3 के लिए फॉर्मूला बनाना है, 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन. लेट्स से मुझे ऐड करना है 3 टू द पावर 8 तक. तो व्हाट शुड बी माय फॉर्मूला? अगर तुम जीपी से जाओगे, दिस इज 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस एंड सो ऑन अप टू 3 टू द पावर 8.
नंबर ऑफ टर्म्स, इफ यू काउंट नंबर ऑफ टर्म्स देयर विल बी 9 टर्म्स, क्योंकि मैंने 8 तक लिया है तो आई स्टार्टेड फ्रॉम 0, तो n का वैल्यू 9 हो गया। यहाँ पे अगर पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 to the power 9 minus 1 upon 3 minus 1. So this formula comes looks like 3 का नेक्स्ट पावर लेना है, -1 करना है, बट डिवाइड बाई 2 होगा बिकॉज यहाँ पे r-1 है। इन केस ऑफ दैट 2 ट्वाइस जब था पावर ऑफ 2, तो यह 2 - 1 कोइंसिडेंटली 1 हो रहा था। This is how you can get the formula for summation of powers of 3 as well, and that totally based on this geometry, general formula of GP. So this is how you can derive the formula, and power of 2 and power of 3 तो वैसे भी तुम्हें डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए अभी, ठीक है। उसके लिए वापस से आके जीपी का फॉर्मूला क्या था एंड पुट करके वो सब की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पावर ऑफ 3 तो तुम्हें डायरेक्टली आ जाना चाहिए। इन केस दूसरे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आर का वैल्यू डिफरेंट है, आर ग्रेटर देन 1 है, यूल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। देन नेक्स्ट थिंग इज, अगर आर का वैल्यू लेस देन 1 होता है, -1 से लेके 1 तक रहता है, लाइक द नंबर्स लाइक हाफ, 0.5 आई कैन से, और 1/3, ऐसे कुछ नंबर्स आते हैं, नेगेटिव भी चलेगा। तो उसमें उस वक्त हमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग, अगर आर why I am changing this is, let me tell you with an example so that it will be better to understand. Okay, let's take one small example. Let's say I want to add the numbers, and the first number is 10, second is 5, 10 plus 5 plus 2.5, I'll just write 5/2 प्लस 5/4, मैं 2 से डिवाइड करते जा रहा हूं, 5/8 प्लस 5/16 प्लस 5/32 एंड सो ऑन। ऐसे मुझे इनफाइनाइट नंबर्स ऐड करने, इनफाइनाइट, आई सेड इनफाइनाइट। ओके, नाउ सबको एक चीज समझ में आ रहा है, ये डिनोमिनेटर तुम डिवाइड करते जाओगे डेफिनेटली, तो यहां पे बेसिकली आर का वैल्यू बताओ क्या है। The first term is 10 and the value of r is 1/2 which is less than 1, means 1 से कम है और इसके बीच में है, ऐसे भी तुम बोल सकते हो। जब ये कम होगा तो एक चीज समझो, तुम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, a into r to the power n-1 upon r-1। गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे जब तुम r का वैल्यू 1/2 रखोगे एंड नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, ओके, सो दिस विल बी फर्स्ट टर्म इनटू 1/2 का पावर इंफिनिटी -1 अपॉन 1/2 -1। ये तो नेगेटिव आएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर भी नेगेटिव आएगा तो एनीवेज वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बट एक चीज समझो, 1/2 तुम इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी क्लोज टू 0, तो ऊपर तुम्हारा सिर्फ बच रहा है a, नेगेटिव साइन हो गया कैंसिल, इसलिए यहाँ पे r-1 की जगह पे डिनोमिनेटर में कर दो पहले तो 1 - r, एंड ऊपर का r to the power n ही जब 0 हो जाएगा when number of terms are infinite and r is less than 1, or you can say r is in fraction -1 to +1. So are you getting this, why this formula change? This formula will change to ये part, इसका r to the power n 0 हो जाएगा, ये -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते, दिस विल बी 1 - r, दिस फॉर्मूला will be modified as a upon 1 - r. Hopefully you understood this. Okay, अब ये कब चलेगा, when number of terms are infinite। अब in case number of terms infinite नहीं है तो हमने ये फॉर्मूला क्या करना, फिर हमें बैक टू ओरिजिनल फॉर्मूला जाना पड़ेगा। यू कैन यूज दैट r to the power n-1, बट डेफिनेटली फिर क्या होगा गाइस, ये जो होगा ये थोड़ा ये कम आएगा, ये ज्यादा आएगा, बट एनीवेज तो तुम सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, a into 1 - r to the power n अपॉन 1 - r, ऐसे यूज करोगे उस केस में तो ज्यादा बेटर रहेगा। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ये सीक्वेंस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करते हो। जब r to the power n छोटा आ रहा है तो 1 माइनस करो, 1 - r, 1 से छोटा आएगा ना, बिकॉज वो
सो जब r -1 से 1 के बीच में रहेगा तो तुम ये भी यूज कर सकते हो. लिमिटेड टर्म्स है तो, इनफाइनाइट टर्म्स है तो सीधे सीधे इट विल बी a अपॉन 1 माइनस r. सो होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्या क्या चीजें तुम्हें याद रखनी है. nth टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन. आफ्टर दैट अगर r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो नॉर्मल फॉर्मूला, बट इफ इट इज बिटवीन -1 टू -1 टू +1, like numbers like half, -1/2, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑफकोर्स वो डिक्रीजिंग एपी होगा. दैट्स वाई इन केस ऑफ हाफ आई एम टॉकिंग अबाउट. सो वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर इनफाइनाइट है तो तुम्हें r टू द पावर n का वैल्यू क्लोज टू 0 हो जाएगा. कब? लेकिन जब r इसके बीच में होगा तब. देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r. दैट्स as simple as that. Let's move to the next thing. Chalo, we'll do few concept questions now and we'll move to the miscellaneous part, that is mixed question. So first of all, try to figure out these small concept questions. इनके answers क्या होंगे? The product of the first 5 terms of geometric progression is 28. First 5 terms of geometric progression का product 28 है. Then find the third term of that geometric progression. So if the first term is a, second term will be a into r, third term will be a r square, fourth term will be a r cube, next term, fifth term will be a into r to the power 4. It's not theta question. इसमें आंसर ऑप्शंस थे, मैंने यहाँ पे आंसर ऑप्शंस रखे नहीं है. So कैलकुलेशन में थोड़ा सा, क्योंकि नंबर भी एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा इसका. ओके, एनीवेज लेट्स राइट. सो दिस प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी इज 28. इट इज गिवन 28. सो इट इज a टू द पावर 5 into r to the power 10 is 28. So I can say a into r square to the power 5. a to the power 5 into 2 is 10. Is 28. So a r square will be equal to 28 का power 1/5 and I'm taking 5th root. Okay, 5th root of this. 5th root means a r square, and a r square is the third term. So this is t3, which is 5th root of 28. So this is the answer. In case अगर ये 32 होता तो हमें 32 का 5th रूट भी मिल जाता. 1/5 2 to the power 5, तो आंसर 2 आता. अब ये आंसर 2 से भी कम है. Right? So because that's 28, so that's why it's not an integer number. But anyways, this is not a theta question at all. You'll get the answer options for this question if it comes in question comes in CAT. Okay, let's go for the next one. The product of the first 3 consecutive terms of an increasing geometric progression is 216. The product of first 3 consecutive terms of an increasing geometric progression is 216 and their sum is 21. 3 consecutive terms, a, then ar and ar square. The product of 3 consecutive terms, first 3 consecutive terms of an increasing geometric progression is 216 and the sum is 21. So a plus ar plus ar square, this sum is 21. See if you can solve this. A tricky question, I can say. Tricky in the sense it totally depends. If you can solve this, you'll find it easy, but I want you to give it a try. I'll give you 1 or 2 minutes to solve in between. Answer is 6, the 4th term of the GP. Harshvardhan, what is the geometric progression you are getting?
क्या आ रहा है तुम्हारा, कौन सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिला तुम्हें 6 वाला? We are supposed to calculate the fourth term. You mean to say AR? Yes, AR is 6. That's right, because वो तो 6 का क्यूब दिख रहा है यहाँ पे हमें, right? A cube into R cube is 216. 216 is 6 cube. So A into R is 6. That's right. But yes, I'm waiting. You can try it for a minute. See, quickly try it. बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तभी तुम कैट में जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑलरेडी मैंने जीपी के क्वेश्चन कैट में हमने जो आए हैं वो सॉल्व भी किए हैं एज सच, बट उस टाइम पे मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले वगैरह बता दिए थे. सो टुडे इज द टाइम वी कैन जस्ट बिल्ड अप ऑन बेसिक्स इफ यू डोंट नो. Okay, AR is 6, that's right. A into R bracket cube is 216 is 6 cube इसलिए. After that, the sum of their sum is 21. ओके, आर का वैल्यू 2 मिल गया, मतलब तुम्हें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही मिल गया होगा. आर का वैल्यू 2, तो ए का वैल्यू तुम्हें मिला होगा 3. आंसर इज 24, राइट. क्या करना था? ए इज 3, ए आर विल बी 6, ए आर स्क्वायर विल बी 12. तो 12 इंटू 6 into 3, ये आ रहा है 216, राइट. एंड 12 plus 6 plus 3, it comes out to be 21. That's right. So fourth term will be AR cube, that will be 24, right. अब ये बिल्कुल ट्रायल एंड एरर से भी हो सकता है, जैसे मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे, that's 24 is the right answer. कैसे सॉल्व किया बट तुमने? You go by trial and error कि ऐसे ही छोटे नंबर, बिकॉज द नंबर्स वर रियली स्मॉल, बिकॉज एडिशन 21 आने वाला है. एक नंबर तो फिक्स हो गया कि ये 6 है, तो बचे हुए दो नंबर्स का एडिशन भी तुम्हें पता है कि 15 होगा. 12 and 3 वो नंबर्स है, राइट. आई टुक ए आर एज 6. ओके, तो तुमने इक्वेशन से किया, दैट्स द राइट वे टू डू. बिकॉज इन केस वैल्यूज थोड़े बिगर हो जाते तो तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड वे पता होना बिल्कुल जरूरी है. सो इफ यू वांट टू गो बाय द स्ट्रक्चर वे, ये बिल्कुल ट्रायल एंड एरर से हो सकता था, बिकॉज वैल्यूज ही उतने इजी थे. आर का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 3, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन 6 आ रहा है, तो 2 into 3 तो किसी को भी कोई भी ट्राई कर सकता है. इवन कि 6 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? a into r is 6. दैट सिंपली यू कैन से जस्ट ट्राई इट 1 6 या 2 3 ऐसे कुछ इंटीजर में अगर तुम ट्राई करो तो, एंड डेफिनेटली ये क्रैक हो जाता था. दिस इज 24, राइट. ओके, अदरवाइज यू कैन डू ए आर एज 6. तो a का वैल्यू क्या होगा? 6 अपॉन r, एंड ये होगा a r का वैल्यू 6 इंटू r. दिस इज 21. ऐसे ही किया तुमने हर्षवर्धन? I took AR as 6, so 4 options and 3 to fitted. अच्छा, मतलब तुमने ट्रायल एंड एरर से किया बेसिकली. ओके, सो हर्षवर्धन द इक्वेशन वाला मेथड से अगर करना है ना, तो AR is 6, तो मैं R को वैल्यू A का वैल्यू में लिख सकता हूं 6 अपॉन R. AR का वैल्यू 6 रख दो, AR स्क्वायर का वैल्यू 6 इंटू R रख दो. एंड अभी ये इक्वेशन सॉल्व करो. आई एम क्वाइट श्योर तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं. 6 plus 6R plus 6R square upon R is equal to 21. So 6 plus 6R plus 6R square is equal to 21R. So you'll be getting the equation as 6R square minus 15R plus 6 equals to 0. That's the quadratic equation. क्या ये मेथड समझ में आया तुम्हें?
3 से डिवाइड भी कर सकते हो, 2r² माइनस 5r प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो 2r², 2 इंटू 2 4, मल्टीप्लीकेशन 4 होना चाहिए और एडिशन -5 होना चाहिए. तो r मस्ट बी इक्वल टू -4 -1, तो +4 +1 होगा साइन चेंज करने के बाद. एंड ये a से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 2. सो इज इट 2 और 1/2? तो r का वैल्यू हमें मिल रहा है हर्षवर्धन, r इज 2 और 1/2. 1/2 लोगे तो दिस विल बी डिक्रीजिंग एपी, बट हमें ऑलरेडी दिया है इट्स एन इंक्रीजिंग एपी, तो मैं 1/2 कैंसिल कर दूंगा और r का वैल्यू 2 लूंगा. राइट, सो दिस इज 6, दिस इज 3, r का वैल्यू 2 है, 12, and the next term in the series will be 24. That's the answer. Let's move to the next one. The 7th term and 12th term of arithmetic progression is 34 and 59 respectively. Find the 29th term. That's really easy question. A plus 6d and a plus 11d is 34. This is 59. So you can get the difference as 5d as 25. So d is 5. Difference अगर 5 है, 5 6 are 30. A has to be 4. And we want 29th term, that is a plus 28 into d. That's 4 plus 28 into 5, 144. Right, the first one. That's really easy. The 8th time, try for this one. Again, a equation based question, you can try it. Any answer? So most of the question I won't be able actually it is not needed for me to explain. You can do it at your own, just practice it quickly. In case of doubt, I'm here to explain. So if 8 times the 8th term of arithmetic progression is equal to the 7th time, 8th time, the 8th term of arithmetic progression is equal to the 17th time, 17 times of the 17th term of that progression. It's an arithmetic progression. First thing, find the 25th term of the progression. What happened, Harshvardhan? No answer yet. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए.
Okay, is it time consuming? You took seventh term. Okay, listen. Eight times of eighth term of arithmetic progression is equal to 17 times of 17th term. That's easy, I guess, right? And we are supposed to calculate what is 25th term. Okay, silly mistakes हो गए. Eight times of a plus 70 is equal to 17 times of a plus 16d. Okay, what happened? अभी भी नहीं आ रहा है तुम्हें? Have you framed this equation? 8 times of 8th term मतलब क्या? It's arithmetic progression. Hopefully you observe. तुम GP तो try नहीं कर रहे हो ना? So 8 times of a plus 7d and 17 times of a plus 16d, right? So can I write this as 8a plus 7 8s of 56d is equal to 17a plus क्या हो रहा है? 17 times of 16. 17 का स्क्वायर होता है 289, उससे 17 कम. 272. क्या तुमने ये सेम इक्वेशन फ्रेम किया कि नहीं? इट्स जस्ट 3 स्टेप्स का तुम्हारा आंसर था, दैट्स इट. ओके, सो लेट्स चेक नाउ. 56d उधर लो, 8a भी उधर लो, इधर 0 हो गया. नाउ यू गॉट इट करेक्ट. 9a प्लस कितना d होगा? 56 माइनस होगा तो 16d. Sorry, 216d divided by 9. A plus yes, that's right. 9 2s are and 9 4s are 24d. So it is a plus 24d is 0. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्टूडेंट यहां तक पहुंच जाता है, तुम्हारे सामने आंसर है. दिस इज 25th टर्म. T25 is 0. Right, so that was the answer, option B. ओके, कहाँ पे मिस्टेक हो गया इसमें? तुमने 3 स्टेप में कहाँ पे मिस्टेक कर दिया? इट शुड नॉट हैपन दैट वे. ओके, एनीवेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ये बिल्कुल इजी है. आई वांट यू टू ट्राई इट नाउ. डोंट गेट कंफ्यूज. दिस इज रियली इजी क्वेश्चन, but most of the time student get confused with this.
The sum of the 11 terms of an arithmetic progression having a common difference as -3. So we know the difference is -3, and sum of the 11 terms, find the first term. That's 1. राइट तुम आंसर ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो ऐसे तो. Sum of 11 terms is -176 and is 11. 1 or -1? Okay, -1. 11 by 2 in bracket 2a minus 10 into 3 is -176. स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, दैट्स -1. राइट, या फिर किसी ने ऐसे सोचा होता -1 फिर -4 होगा, फिर -7 होगा. सो वी नो दैट हैज टू बी अ नेगेटिव नंबर यहां से. बट एनीवेज वो तो ट्रायल एंड एरर से तो नहीं होगा, यू हैव टू एड इट ओनली. Okay, this is the way you can do. That's just 2-3 steps, not a big deal to do that. -1 is the right answer. Yes, option had to be negative, but we do have -2. Slightly confusing हो सकता था, but anyways this one is easy, right? Try for this. चलो अभी आगे कुछ questions आएंगे. There will be few questions which will be really tricky. Let's see if we can tackle. जो easy है वो खत्म करो. चलो जल्दी से quickly. If Tn is the nth term and Sn is the sum of the first n terms of the arithmetic progression, and 7 times of T21 is equal to 12 times of T16, then find the sum of the first 17 term. Try it. 7 times of T21 is equal to 12 times of T16. Similar front, थोड़ा सा means twist किए हैं. That's it is quite similar to the previous question that we solved. So 7 times of it's an arithmetic progression, so a plus 20d is equal to 12 times of a plus 15d. 7a plus 140d is equal to 12a plus 15 into 12 is 180d. This is 0. Again 0. Sum, हमें sum पूछा है. Sum 0 ना. Okay, so you're getting a plus 8d as 0, right? That is 9th term.
Yeah, 2a plus 16d, that's 0. It has to be 0, right? Just let me check. हमें 17th, यस 17 टर्म है तो फिर 0 ही आएगा, राइट। राइट, अगर 18th टर्म होता तो फिर चेंज होगा, बट एनीवेज फिर उस केस में हमारे पास वैल्यूज नहीं है, राइट। इट हैज टू बी 0, परफेक्टली फाइन। और सिंपली यू कैन से ये मिडल टर्म है, दिस इज मिडल टर्म इज द एवरेज ऑफ 17 टर्म्स, राइट। 17 टर्म का एवरेज 0 आएगा तभी तो मिडल टर्म 0 आएगा ना। This is 9th term, which is the middle term between first 17, right? Try for this. How many terms of an arithmetic progression have the sum 1836 and have arithmetic mean? Arithmetic mean is average, okay? That's simple question now. 51 average होना चाहिए, so that has to be a middle term. कितना आएगा इसका आंसर बताओ। वन 1836 डिवाइड बाय 51, होपफुली यू आर गेटिंग दिस, राइट। समझ में आ रहा है ये क्या है? So what should be the answer? $36. Is it right? क्या हो गया बोलो। ओके, यू अंडरस्टूड ना, मीन्स देखो ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ ये 1836 को 51 से डिवाइड करना है, दैट्स इट। बिकॉज समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स आएगा एवरेज, एंड वी नो मिडल टर्म हैज टू बी एवरेज, राइट। Done. Chalo, let's go for the next. If the sum of the n terms of arithmetic progression whose first term is 11 and whose nth term is 44 is 330, बोलो क्या आंसर है इसका। First term is a and whose nth term is 44, so a plus n minus 1 d is 44, so n minus 1 into d must be equal to 33. And the sum of the term
is 330, which is n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 d. This is 330, n by 2 in bracket 2a. 2a is 2 into 11, that is 22. N minus 1 is n minus 1 d is 33. You can just put 33 over there and get the value of n. It's again a simple calculation based question. N by 2 into 55 must be equal to 330. 11 5s are 11 3s are 30, 5 6 are 1 is 12. Right, Harshvardhan? That's an easy. Try for this one. See if you can solve this. चलो अभी थोड़े से tricky questions आएंगे. Few more questions for the day. Mixed question now. AP, GP कोई भी आ सकता है. Find the common ratio of geometric progression whose nth term is 6 to the power 2n minus 3. So can you tell me what is the common ratio R? Think about it for a minute and let me know if you have any answer. क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? nth टर्म के फॉर्मूले के साथ कंपेयर कर रहे हो. Geometric progression, what is the formula for nth term? A into r to the power n minus 1. नहीं, बट r का वैल्यू, a का वैल्यू तो 1 भी हो सकता है ना. How to get it? n माइनस 1 को 2n माइनस 3 लेना सही है क्या? क्योंकि a का वैल्यू तो हमें पता नहीं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कुछ भी नहीं पता. कैन यू डू समथिंग एल्स? अच्छा मुझे एक बात बताओ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म, राइट? 6 into 2 to the power n minus 3. It's not that much tough. अगर तुम प्रॉपर सोचोगे तो क्या तुम मुझे फर्स्ट टर्म का वैल्यू बता सकते हो? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपीटी? जब तुम्हें nth टर्म दे दिया तो n इक्वल टू 1 रखो और गेट द फर्स्ट टर्म, राइट? Isn't it easy? Yes or no? तुम सीधे सीधे टर्म्स, जब तुम्हें nth टर्म का जनरल फॉर्मूला दिया है तो यू कैन जस्ट गो फॉर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. हमें टर्म्स ही मिल जाएंगे ना. पुट द वैल्यू ऑफ n एज 1 2 3 4 एंड सो ऑन and get the ratio. Why to get into the formula, right? So n equal to 1 रख दूंगा मैं, तो हमें क्या मिलेगा? 2 minus 3, that is minus 1. तो 6 to the power minus 1, which is 1 by 6. and t2 अगर मुझे चाहिए तो वो आएगा 2. n equal to 2 रखो, 4 minus 3 is 1, तो ये आएगा 6. then t3 अगर तुम रखोगे, this will be 2n minus 3, so n is 3, n is 2. बोलो आंसर क्या है? 6 minus 3, that is 6 cube.
इंटू 36, यहां से यहां इंटू 36. इज इट इजी क्वेश्चन और टफ? देखो समटाइम्स ऐसे कुछ हो जाता है ना, कैट में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी. इट इज मीन्स तुम्हारे आंखों के सामने आंसर है, यू हैव टू जस्ट पुट इन द वैल्यूज एंड गेट इट राइट. क्योंकि तुम फॉर्मूले में जाओगे उधर तुम्हें दो अननोन्स दिखेंगे. इजी, दैट्स इजी क्वेश्चन एक्चुअली. You should know the approach, that's the important thing. Then next thing, try for this. How many terms of arithmetic progression? 8, 13, 18 add up to 640. It's really easy. I want you to tell me. Chalo, quickly finish it. I don't think I need to even explain to this question. ओवर थिंकिंग हो गया. Okay, chalo, speed up. How many terms of arithmetic progression? This will add up to 645. Bolo. 2 into 8, n by 2, let's say n terms, plus difference is 5, n minus 1 into 5, and this must be equal to 645. This is how you are solving. Okay, just make a double of that, that is 1290. How to do this calculation part? You're not using the answer options properly. Can you use the answer options? If I do this way, 14 into 14 5 is 70 plus 81. This cannot be the answer. If I try 15 into 15 आंसर है पक्का. यस दैट्स राइट. कैसे ऐसे किया तुमने? ट्रायल एंड एरर से करेंगे डेफिनेटली. हम इक्वेशन क्यों सॉल्व करते रहेंगे? अदरवाइज यू कैन गो एंड सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो, बट जब हमें इक्वेशन ही सॉल्व करना है तो उससे बेटर तो फाइनल आंसर मिल ही रहा है तो तुम यहाँ से ट्राई कर सकते हो. 75 plus 11 is 86. That's an even number and this multiplication तुम कर भी सकते हो. This is 3 into 5 and this is 86 मतलब कितना? 43 into 2. तो मुझे पहले तो मैं जीरो लाने की कोशिश करूंगा. 5 into 2 से मेरा जीरो आ जाएगा एंड 43 का 3 times 129 आ जाएगा.
राइट. सो दैट्स द वे आई डू. मीन्स यहाँ पे लास्ट में तुम्हें जीरो भी दिख रहा है, तो इतना इजी कैलकुलेशन था. वाई कैन यू यूज द आंसर ऑप्शंस रादर देन सॉल्विंग दिस इक्वेशन. राइट, यू कैन मैच नंबर टू डिजिट मैच हो रहा है. सो सिंपली जहां पे परफेक्टली आंसर आ रहा है 1290 वहां पे आ रहा है, वो आंसर सही है. Try for this one. Now few tricky questions. Let's see if you can manage. Okay, you didn't read that. Didn't read that add up 2. That is summation. That is summation. Chalo, anyways, this is the question where you'll learn something. और कैट में काफी बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. We have a way to solve this question. Think about it at your own. First of all, try it at your own. Then we'll discuss the method. And let me tell you, it's not tough question. Okay. Numerator will be xy. Okay. Yes, I guess that's right. But तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो? Okay, listen, Harshvardhan, there is something we call it as mathematical induction. Mathematical induction मतलब हम क्या करते हैं? This is the way to solve the questions. And काफी बार ऐसे हुआ है कैट में कि ऐसे क्वेश्चन आए कि तुम एक्चुअली उसको सॉल्व करने जाओगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे, या फिर यू हैव टू बी. आंसर ऑप्शन सी आ रहा है तुम्हारा. यस, दैट्स राइट आंसर. कैसे सॉल्व किया तुमने? You have used the variables only a, b, x, y. इसी के साथ सॉल्व किया. Okay. Okay, so listen what I was talking about, mathematical induction. Suno, can I say this is general statement about this series? ये सीरीज है x and this is y, and ये कुछ नया सीरीज बनाया and everything is generalized, means clear. अगर ये जनरल एक्स वाई के लिए वर्क कर रहा है तो कैन यू जस्ट थिंक अबाउट द वैल्यूज के लिए भी वर्क करेगा कि नहीं करेगा? लिसन, डू नॉट गो बाय दैट वे. आई जस्ट टेल यू अ मेथड जिससे तुम क्विकली विद इन अ मिनट फिनिश कर सकते हो इसको. ओके, फर्स्ट थिंग, एज पर कंडीशन ए इज ग्रेटर देन 1, राइट? सो कैन आई टेक ए इक्वल टू 2? देखो अब ए पे चल रहा है तो तुम एज पर कंडीशन ए कुछ भी ले लो, 2 ले लो तो 2 पे भी चलेगा ही ना. सो कैन आई से x का वैल्यू इज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, राइट? देन वी नो y इज क्या है? y
b इज लेस देन 1. सो एक काम करते हैं, मैं b को 1/3 लेता हूं. 1/3 चलेगा, 1/2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1/3, 0 to 1 के बीच में 0.333 आता है. 1/3 मैंने लिया, that should be decreasing, that's the only thing. अब ये infinite terms है, okay, and we know this is 1/3, 1/3 square and 1/3 cube. बेसिकली ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एकदम बेसिक चीज है जो मैंने तुम्हें बताया था. जब r लेस देन 1 होता है मींस 1/3. बेसिकली यहां पे भी r का वैल्यू 2 नहीं है, ये भी हाफ ही हो रहा है, राइट. सो दिस इज द जीपी वेयर r इज 1/2 एंड इस केस में r इज 1/3. तो क्या था अपना इनफाइनाइट टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने जीपी का? सम ऑफ जीपी इनफाइनाइट टर्म्स r इज लेस देन 1, -1 से 1 के बीच में रहता है. तो फॉर्मूला था a/1 minus r. होपफुली यू रिमेंबर दैट. यस, नो? So I'll write here only. Yes, okay. So a का वैल्यू 1 है, 1/1 minus 1/2, and this is 1/1 minus 1/3. Not a big deal to solve. x का वैल्यू तुम्हें मिलेगा 2 and इसका वैल्यू मिलेगा 3/2 which is 1.5. So I got x as 2 and y as 1.5. This is a really the structured question you can get in CAT. क्योंकि हमें क्लियरली अप्रोच अगर पता है तो किसी को भी पता है कि मैं ऐसे सॉल्व करके देखूंगा तो गारंटेड मेरा एक आंसर ऑप्शन मैच होगा, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग. ये जो सीरीज है, this is superb, right? So this is mathematical induction, okay. If it is general thing, it will work for values. That's what the thing is, right? So why we'll be solving that? We'll just cross check कि कौन सा आंसर ऑप्शन मैच हो रहा है, right? So if you go for this one, 1 plus b by a, we know b is 1/3 and a is 1/2. Sorry, b by a is 2 basically. So दोनों डिनोमिनेटर में ही आएंगे, but right? 1/2 into 3 plus 1/2 square into 3 square, right? Because b तो डिनोमिनेटर में जाएगा, a तो डिनोमिनेटर में है ही, 2 square डिनोमिनेटर में, वो b square जो होगा 1/3 square that will be also in denominator. So again ये भी इनफाइनाइट सीरीज है. सेम फॉर्मूला यहाँ पे r का वैल्यू जो है ये 1/6 है, right? Hopefully you're getting it. 2 or 3, 2 into 3, 2 into 3 हो रहा है, डिनोमिनेटर में 1/6. So it is 1/1 minus 1/6, right? So it has to be 6 minus 1, that is 5. So 6/5 मेरा आंसर आना चाहिए. So इसका आंसर 6/5 होना चाहिए. That's right. तो अभी मैं क्या करूंगा, आंसर ऑप्शन में से वैल्यूज लूंगा और वहां पे 6/5 लाएंगे उसको, राइट. सो दिस इज 1 पॉइंट, रियली सिंपल कैलकुलेशन. नाउ 1 x is 2, 2 minus 1 this will be 1, y minus 1, 1.5 minus 1 will be 0.5, and x minus 1 minus 2 and minus 3.5. So it will be minus, this will be negative. First thing तो ये negative आ रहा है, मैं ऐसे ही neglect कर दूंगा. Am I right? Okay, उसके बाद मैं दूसरा आंसर ऑप्शन वापस से चेक भी नहीं करूंगा बिकॉज वो भी नेगेटिव आएगा. 1 minus 2 minus 3.5, हमें उसको एग्जैक्ट 6/5 लाना है. दैट इज द पॉजिटिव आंसर. दिस इज नेगेटिव. तो ऐसा कुछ मिल रहा है तो और भी हमारा काम इजी हो गया. हमें दो आंसर ऑप्शंस तो ऐसे ही छोड़ देने थे, राइट. इफ यू ट्राई फॉर थर्ड वन, दिस विल बी 2 into 1.5 डिवाइड बाय 2 plus 1.5 minus 1, that is 2.5. So which is 3 by 2.5
which is 30/25, that has to be 6/5. बोलो क्या हो गया? What is your question? बोलो, you understood this question or no? इफ यू जस्ट टेक टू वैल्यूज, देखो इसमें प्रॉब्लम ये होगा, इट विल वर्क अप्रोक्सीमेटली, इट विल वर्क, बट वी डू हैव, देखो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज ऐड करने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा ना 2, तो तुम अगर 2 वैल्यूज लोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 तक नहीं पहुंचेगा, वो 1.5 रह जाएगा फिर, विच इज रॉन्ग एक्चुअली, बिकॉज देखो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे अगर तुम्हें अप्रोक्सीमेटली लेना है ना तो व्हाट यू कैन डू, ये 0.5 है, फिर 0.25 होगा, फिर 0.125 होगा, तो तुम अप्रोक्सीमेटली देखते जाओगे ना तो ये क्लोज टू 2 जाएगा, तभी ये निग्लिजिबल में चला जाएगा। दैट्स वाई हम उसको एग्जैक्टली 2 लेते हैं, क्योंकि आगे के वैल्यूज तो क्लोज टू 0 जा रहे हैं। Are you getting this? So do not approximate it. तुम यहाँ पे मीन्स बेसिकली 2 टर्म ले रहे हो, मतलब इसको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, एक्चुअली वो 2 है, तुम उसको 1.5 ले रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। Understood that thing? And anyways, why to approximate? We can simply add infinite terms, जब a/1 minus r से add ही कर सकते हैं, तो exact value लो ना, that's 2 and 1.5, right? जब ये 2 आ ही रहा है, एक सिंपल फॉर्मूला, एज सच ये लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, यू शुड बी एबल टू डू इट डायरेक्टली। मैं यहाँ पे मीन्स यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा तो मुझे डायरेक्टली आंसर पता चल जाएगा, 1/1 minus 1/2, दैट्स 2, राइट? सी, shall I show you the actual method to solve this question? जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, इट इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन अबाउट द क्वेश्चन। अगर मुझे तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलोगे, a greater than 1 बोल रहा है, हम यहाँ पे 2 लेंगे, 2 स्क्वायर, सो दिस इज द सीरीज वेयर 1/1 minus 1/2, एंड मैं यहाँ पे b का वैल्यू 3 रखूंगा, सॉरी 1/3 रखेंगे, 1/3 स्क्वायर, सो आई विल डू 1/1 minus 1/3, सो आई विल गेट 1.5 and 2। इतना इजी है, मैं इतना ही राइटिंग पार्ट होना चाहिए। डू नॉट राइट द एक्सप्लेनेशन पार्ट, इट इज जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज if you are doing it for the first time, if I just write this way, you won't understand anything, right? So this is the actual way to do. Was that easy? So this is what we call it as mathematical induction, where we cross check कि ये जनरलाइज चीजें हैं, ये कहाँ, अगर ये जनरली ट्रू है तो फिर कुछ वैल्यूज के साथ भी इन्होंने ट्रू होना चाहिए, एंड यू जस्ट निग्लेक्ट द आंसर ऑप्शन एंड गेट टू द करेक्ट आंसर। दैट्स द वे टू सॉल्व। ओके, let's move to the next one. This one is easy, you can manage. The least value of n that satisfies this equation, 4 to the power n, must be greater than 2006. What do you think? ये तो orally भी कर सकते हो तुम। Look at the answer options, 5, 8, 6, 7. Summation कर सकते हो, मीन्स ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, but I don't think it is needed. What's the value of n? बोलो आंसर। n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, दिस इज n।
there are 6 terms, but यहाँ पे number of terms नहीं है. N is 4 to the power n, which is 4 to the power 5. Hopefully you understood that. That's really easy question. Need not to do that. ऐसा कुछ आने वाला नहीं है. Let's go for the next. Try for this. These 3 terms are in arithmetic progression, then find the value of x. Really simple one. इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए. 3x plus 4 minus 2x plus 1 must be equal to 7x minus 2 minus 3x plus 4. So 3x minus 2x is x plus 3 will be equal to 7x minus 3x, that is 4x minus 6. 3x equal to 9, x has to be equal to 3. और बिल्कुल ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गए बीच में. So let's keep this. That's really easy. I want you to solve few tricky questions. Just 1 or 2 questions we are left out with. Try for this. Trying to find that old questions, means you mean to say you can search me on Telegram. I'm there by the name of, you can search for Shyam_life. On YouTube you can simply go to the created playlist. Go to created playlist on YouTube. Okay, you'll get the all the playlist where you'll be getting all the questions from CAT 2017, 18, 19, all for quantitative ability as well as for the LRDI. So LRDI मैंने सिर्फ LRDI practice previous year questions ऐसे नाम है. LRDI practice PYQ is previous year questions. उसमें तुम्हें CAT 17 to 19 तीनों साल के दोनों सारे slots, each and every set is explained over there. LRDI practice PYQ ऐसे नाम है. That's the series. And the आज का जो LRDI का था वो भी उसी प्लेलिस्ट में है एक्चुअली. सो इट इज मैनेज्ड विद अ प्रॉपर प्लेलिस्ट. यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब. आई एम टॉकिंग अबाउट. What happened 1 plus 1 by a question? I'm not getting you. Okay, try for this. क्या आएगा इसका आंसर? This is xp. तो pth टर्म तुम बोल सकते हो, nth टर्म जैसे हम लेते हैं. It is under root of 2 to the power p. And we are given summation of this when p equal to 1 to n. ये summation का symbol है. Hopefully you know that and what that means.
Okay, I'll solve it for you. It is just this is not tough question. Okay, listen. Can you just take p का वैल्यू 1 से लेके n तक हमें जाना है, and we want the value of n such that ये summation इतना आ जाए, right? We are supposed to calculate the value of n. So take p equal to 1. What will be the value of x1? This is xp means x1 क्या होगा? √2 to the power 1. What will be the value of x2? This will be √2 to the power 2. Basically you are multiplying it by √2, which is nothing but geometric progression. Of course मैं geometric progression topic पढ़ा रहा हूँ, तो ये इसमें कुछ ना कुछ progression ही बनेगा, right? It is not given over there कि GP है या क्या है. If you use this and solve this, you'll get मैंने पहले p equal to 1 लिया, फिर p equal to 2 लिया. If I take p equal to 3, I'll get x3 as 2 √2. This will be 2. Okay, again it is multiplying. We are multiplying it by √2, right? So we don't know what should be the value of n such that ये summation जो है, what is the sum of GP? Sum of GP, we have the formula as first term, sorry, a into r to the power n minus 1 upon r minus 1, right? So what is the value of a here? ये सारे ऐड करने हैं हमें, √2 से लेके ऐड करना है. So this is the value of a. a का वैल्यू भी √2 है, r का वैल्यू भी √2 है. If you look at this series, a is √2. We started with the first term as √2 and we are multiplying it by √2. So r का वैल्यू भी √2 है, a is also √2. We want this summation to be 15 √2 plus 30. ओके, अब आते हैं, सुनो, ये एक तो मैं इसको सॉल्व करूंगा. √2 a का वैल्यू √2, r का वैल्यू √2 रखो और ये इतना आना चाहिए. तो नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू हमें निकालना है, राइट? हैव यू अंडरस्टूड दिस? √2 into √2 minus √2 to the power n minus 1 upon √2 minus 1. This is quite complicated, right? Complicated, na? Okay, I'll tell you how to solve this. Okay, so this is the sum and a का value √2 into √2 to the power n minus 1 upon √2 minus 1. ओके, आर यू विथ मी नाउ? लिसन, अभी मैं तो एक ट्रिक बताता हूं. वापस से क्या करना है हमें, हम इसको सॉल्व करने से बेटर यहां पे हमें दिख रहा है 15 30 ऐसे कुछ आ रहा है, राइट? तो 15 लाने की कोशिश करते हैं. क्या लगता है तुम्हें कहां से 15 मिलेगा हमें? 15 पावर ऑफ 2 ही है, यहां पे तो पावर ऑफ 2 ही है ना, राइट हर्षवर्धन? n का वैल्यू √2 मतलब हाफ होता है, राइट? तो पावर में हाफ रखना है और ऊपर n रखना है, तो इधर से ही कुछ ना कुछ वैल्यू पिक करना पड़ेगा. व्हाट शुड यू पिक? हाफ किसका हो रहा है? इजीली हाफ किसका हो रहा है? या तो 10 का या तो 8 का, राइट? अगर मैं 10 पिक करूंगा ना तो ये आएगा 2 to the power 5 minus 1 which will be 31. तो हमें 31 तो नहीं चाहिए, हमें 15 चाहिए. तो तुम्हें आंसर ही मिल गया होगा होपफुली. व्हाट्स द आंसर? आई विल पिक दिस वैल्यू एज 8. अब देखो क्या होगा, 8 अगर पिक करोगे तो दिस विल बी √2 to the power 8 which is 2 to the power 4. 2 to the power 4 minus 1. If we calculate this, this will be √2 into 2 to the power 4 होगा 16 minus 1 which is 15 upon √2 minus 1. फिर सीधा सीधा रैशनलाइज करना है, दैट्स इट. देखो पहले मैंने 15 लाया, फिर मल्टीप्लाई करो √2 plus 1 से,
ऊपर भी √2 + 1 से मल्टीप्लाई करो. What you'll get, denominator will be just 1 and 15 √2 into √2 will be 30 and this will be 15 √2. 30 plus 15 √2 which is our summation. This is how I can pick. इतना सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 15 तो उसी से आएगा, दूसरी जगह कहां से 15 आएगा. तो दिस वॉज द राइट आंसर. ये समझ में आया तुम्हें? ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये समझना है बिल्कुल कि कहां पे हमें आंसर ऑप्शंस यूज करने चाहिए एंड वेयर कैन वी सेव ऑन आवर टाइम. Definitely this questions require a proper presence of mind rather than concept तो लगेंगे. definitely तुम्हें पता होना चाहिए geometric progression क्या है, arithmetic progression क्या है. You should be able to comprehend the question, but most of the student what they do, even if they understand the question, just because तुम calculations में indulge हो जाते हो तो तुम आंसर ऑप्शन तक पहुंच नहीं पाते हो. So make a point कि तुम थोड़ा सा आंसर ऑप्शंस पे ध्यान रखो. जहां पे भी तुम्हें कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं ना, क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, वहां पे कुछ आंसर ऑप्शन एटलीस्ट ट्राई करो. ओके, होपफुली दैट्स इजी नाउ, राइट. अगर हम आंसर ऑप्शन से ये देखते हैं कि 15 लाने के लिए 2 to the power 4 16 होता है, 16 - 1 15 होगा, तो 8 शुड डेफिनेटली वर्क, राइट. चलो लेट्स ट्राई फॉर द नेक्स्ट फ्यू शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर द डे. X, Y, Z are three positive integers which are in arithmetic progression. Then X, Y, and Z plus X are in geometric progression. So these are in arithmetic progression. So I can say Y minus X is equal to Z minus Y. Z minus Y will be equal to Y minus X. Sequence में ले, clear sequence, okay? Doesn't matter, वो वैसे भी वेरिएबल्स है, hardly matters. So what I can say, y को इस साइड लेते हैं, 2y is equal to x plus z, या फिर तुम नॉर्मली भी बोल सकते हो y is the average of x plus z. Answer option is A. Yes, that's right, correct answer. And this is x, y and y plus z are in geometric progression. That simply means y square must be equal to, देखो इसमें क्या होता है, y upon x will be equal to z plus x upon y. ये रेशियो सेम आना चाहिए ना. y is equal to x plus x into x plus z. We'll just put the value of x plus z. X plus z is 2y. Y gets cancelled. Y upon x is 2 upon 1. So x is 2, y तो पहले मिल गया, 1 is to 2. And अगर x1 है, y2 है, तो 2 into 2 4 होता है, तो z को 3 होना पड़ेगा. That's an easy one, right? Yes, last one requires hard thinking, right? What about this? Think about it. Even this is easy. If you are good with that indices part, Search indices, अगर तुम अच्छे खासे Search indices के क्वेश्चन किए होंगे ना, तो सिमिलर लॉजिक तुमने पहले यूज भी किया होगा, आई गेस, because most of the time every year we get the question on indices as well. This is mixed with geometric progression.
आ रहा है क्या कि नहीं? शुड आई सॉल्व इट फॉर यू? You wanna try? And PQR in geometric, ये geometric project progression नहीं है definitely. These are equal. These three are equal, and PQR are in geometric progression. C, no, it's not C. It's not C. Okay, listen. What you need to do, ये जो है ना P to the power S, Q to the power T, R to the power U, इन सबको मैं कांस्टेंट लेता हूँ K. That normally we do in indices. हम काफी बार ये शॉर्टकट यूज में, ये टिपिकल चीज है जो indices में हम काफी क्वेश्चंस में यूज भी करते हैं. If you solve the questions, you'll get to know. Okay, so P to the power S is K. So can I take P का value as K to the power 1 by S, Q का value as K to the power 1 by T, am I right? And R का value as K to the power 1 by U. जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, फिफ्थ रूट लेते हैं, वैसे ये हो गया टीएथ रूट, एसएथ रूट, यूएथ रूट. राइट, डी इज द राइट आंसर. ओके, ये समझ में आया तुम्हें ये ट्रिक? डू नॉट फॉरगेट दिस. ओके, ये बिल्कुल यूज होता है काफी बार. ओके, एंड वी नो पी क्यू आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट सिंपली मीन्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर. ऑलवेज रिमेंबर दैट. जब भी तुम ए आर और ए आर स्क्वायर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, विच इज मिडल टर्म का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ज्योमेट्रिक मीन. मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस पार्ट. इवन हम उसको प्रपोर्शन में भी यूज करते हैं. कंटिन्यूड, इट्स लाइक कंटिन्यूड प्रपोर्शन ओनली, राइट? 3 terms of GP are in always in continued proportion. So q square, that is k to the power 2 by t, will be equal to k to the power 1 by s into k to the power 1 by u. And if you add this, base same है तो ये add होगा, 2 by t will be equal to k to the power 2 by t will be equal to k to the power, exactly वही आएगा. उसका रेसिप्रोकल आएगा, सॉरी, s प्लस यू अपॉन एस यू, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो you'll get t by 2. 2 by t या t by 2, क्या आंसर आ रहा है? It's t by 2 ना. राइट, ओके. Even you can skip this one. Last 2 questions for the day, and this one is really easy. This is the infinite series. Last one, I don't know if you can solve or not. One tricky question hopefully, and that's not lengthy at all. All the questions are really short questions now. So this is divided by 11. Again 1 by 11, which is less than 0. So what is the infinite series? A upon 1 minus r, that comes out to be 110. बोलो हर्षवर्धन, क्या प्रॉब्लम है? It's 121. Last question. Which one? Bolo, what's the problem?
PQR in geometric progression, right? So it is as good as PQR. I can write that as AR square. So it's nowhere written STQR. So if we take all powers as 1, yes, we can do that definitely. You're talking about the mathematical inductions, definitely you can use it. Why? What's the reason? Why you can use that? Because this was the simple question. Indices मुझे करवाना था इसलिए मैंने ये किया. But anyways, look at this question. Everything is generalized, right? P Q S T. तुम कुछ values लोगे, definitely there is no condition here. कुछ भी value लो, it will work. Definitely it will work. And you can check with the values also, and you can do that way, right? So तुमने अगर PQR को 1 2 4 लिया, बस एक चीज कंडीशन रहेगा, PQR को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रखो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. That's the way you can solve. That is also right way to solve. Okay, that's good. Okay, chalo, one last question for the day. Done. Think about it quickly. So an equilateral triangle is drawn by joining the midpoints of the equilateral triangle. अब इसके midpoint join करने हैं. देन जो भी ट्रायंगल बनेगा उसके वापस मिड पॉइंट ज्वाइन करने हैं. इट में ये क्वेश्चन स्क्वायर के साथ भी आ सकता है. ओके, ट्रायंगल के साथ आया है, ये वापस मैं ज्वाइन करूंगा वापस, एंड सो ऑन. विल कीप ऑन डूइंग दिस टिल वी लेफ्ट आउट विथ स्मॉल पॉइंट. एक सेंटर, एक पॉइंट बचेगा. अब ये जो भी ट्रायंगल्स बनेंगे, ये सारे ट्रायंगल्स को ऐड करना है, सारे ट्रायंगल्स का एरिया ऐड करना है. yes it is decreasing GP, right? And you know how to add the infinite terms of GP, right? So original triangle का एरिया अगर A है, what is the area of equilateral triangle? Hopefully you know the formula. √3/4 into side square. If you don't remember this formula, you have to work on your geometry. Okay, geometry is really important topic. मैंने 5 sessions लिए हैं almost. Most recommended thing, you should go and watch those. If you are weak at, if you are good at it, that's perfectly fine. Then okay, so side of the equilateral triangle is given as 18. So √3/4 into 18 square. That's 324. No, it is not 18. 18 कैसे लिया तुमने? 18 तो उसका साइड है. 18 इज साइड. एरिया तो हमें निकालना पड़ेगा ना. सबसे पहले तो 18 एरिया ही नहीं है. एरिया कितना है? 18 स्क्वायर इज 324 डिवाइड बाय 4.
just let me check. Equilateral triangle drawn by joining the midpoints of a given equilateral triangle of side. So ये पूरा 18 है side. Third equilateral triangle is drawn. Same way the process is repeated infinitely. So सुनो मैंने सिर्फ पहले triangle का area निकाला है. That's it. Have you understood this? 81√3 क्या है? 81√3 is the area of this bigger triangle. Are you clear about this? तो हमें क्या ऐड करना है? पहले तो पूरा एरिया ऐड करना है A. This is A1. फिर जो दूसरा ट्रायंगल बनेगा उसका ट्रायंगल का एरिया A2, फिर A3 प्लस A4. ऐसे सारे एरियाज मुझे इनफाइनाइट ट्रायंगल्स के एरियाज ऐड करने हैं. आर यू विथ मी? अब हमें पता है ये एरिया 1/4 होने वाला है क्योंकि 4 ट्रायंगल में ब्रेक हो रहा है डेफिनेटली. सो 1/4 होता जाएगा. राइट. सो फर्स्ट टर्म इज A1. सो इसका समेशन कितना आएगा? A1 अपॉन 1 माइनस R. दैट इज योर आंसर. दैट्स इट. आर यू क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड दिस? Let me know in the comment section if you have any doubt. So hopefully you are getting the answer as 81√3 पहले हमने निकाला divided by 1 minus 1/4 which is 3/4. 81√3 divided by 3/4. 4 ऊपर आएगा. 324√3 divided by 3. Yes, that right. It is 108√3. Okay, Harshvardhan, listen, one question for you. तुम मुझे बताओ, सम ऑफ ऑल एरियाज की जगह पे अगर मैंने पेरीमीटर बोला होता तो सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ऑल ट्राइंगल्स मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4. लेट मी सी तुम्हें सही में समझ में आ रहा है और तुम सही में अप्लाई कर सकोगे इसको. सो दिस इज डन. दिस इज 108√3. दैट इज राइट आंसर. व्हाट अबाउट पेरीमीटर? पहले ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल? इट इज द सम ऑफ द साइड्स. 18 प्लस 18 प्लस 18. पहला पेरीमीटर आएगा 54. नेक्स्ट ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा? ये मिड पॉइंट ज्वाइन किए थे तो ये 999. ये आएगा 27. तो पेरीमीटर 1/4 नहीं होता है. पेरीमीटर विल बी जस्ट हाफ ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल. सो दिस इज हाफ and this will be half for infinite number of terms. So you should be able to answer this. 54 divided by 1 minus 1/2. 54 का डबल हो जाएगा. 108 if in case of perimeter. तो 2 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए तुम्हें. Hopefully you got that. The area wise area 108√3 आएगा. एरिया है तो हम पहले का एरिया निकालेंगे अपॉन 1 माइनस 1. एरिया में ये 1/4 होता है. आर का वैल्यू चेंज होगा. पेरीमीटर के लिए डिफरेंट होगा डेफिनेटली. एरिया एंड पेरीमीटर इट हैज नथिंग टू डू विथ 18. तुमने कुछ कमेंट में 18 को ही 4 से डिवाइड किया है, 18 को हाफ कर रहे हैं. दैट वाज रॉन्ग. ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे. Okay, so done for the day.
See you tomorrow. Tomorrow I'll be planning few more sessions for the miscellaneous topics and LRDI practice as well. आज मॉर्निंग में तुमने देखा था, मॉर्निंग का सेशन देखा तुमने आज? दैट वाज LRDI जो मैंने आज लिया है मॉर्निंग 8 o'clock. It is the session of 3 hours. The questions were from the old CAT papers, but there were few sets. Totally 8 to 9 sets मैंने cover किए हैं. So out of which you can expect 5 to 6 sets definitely बहुत important थे. So see if you can watch that session.